सो स्टूडेंट्स, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है सिमला डेपुटेशन एंड डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट। सो बेसिकली इन दिस 35 टॉप रैंकिंग जो मुस्लिम लीडर्स थे वो वॉइस रॉय लॉर्ड मिंटो के पास शिमला में गए अक्टूबर 1 1909 में, एंड दे बेसिकली प्रेजेंटेड द डिमांड्स, जो उनके सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड्स थे उसको उन्होंने उनके सामने रखा और उन्होंने ये कहा कि मुसलमानों को बहुत ज़रूरत है कि उनकी एक सेपरेट रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। लकीली वॉइस रॉय का जो एटीट्यूड था दैट वाज वेरी सिंपैथेटिक एंड इनकरेजिंग टुवर्ड्स द मुस्लिम्स। नेक्स्ट आपके आता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग। स्टूडेंट्स, ये वैसे ओवरव्यू है अभी, इसके बाद हमने इसको डिटेल में भी पढ़ना है जैसे कि आपकी बुक में लिखा हुआ है। सो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग, सो सक्सेस हुई शिमला डेपुटेशन की और मुस्लिम्स को एक रास्ता मिला, एक पेव्ड वे फॉर द मुस्लिम्स फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। And this decision was basically taken at the session of Mohammedan Educational Conference at Dhaka in December 1906। और इसका सोल पर्पस, जो मेन पर्पस था, सिर्फ और सिर्फ ये था कि मुसलमानों की जो डिमांड्स हैं वो गवर्नमेंट तक पहुंचाई जा सकें थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, यानी कि जो भी मुसलमानों की डिमांड्स हैं वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से गवर्नमेंट तक पहुंचा सकें। Next is proposals for the solution of constitutional problems. So जो constitutional problems थी they were of very complex nature. Numerous efforts were also made to work out and satisfy the British and the Hindus and the Muslims at the same time. So कुछ proposals जो हैं उसको पेश किया गया और उसका जो overview है आपकी बुक में जैसे कि लिखा हुआ है वो हम अपनी screens पे देख लेते हैं। Number 1, Minto Morley Reforms or the Government of India Act 1909. Number 2, the Lucknow Pact 1916, which was jointly agreed Congress and Muslim League constitutional proposals. Number 3, Montague-Chelmsford Reforms or the Government of India Act 1935. Number 4, the Delhi Muslim Proposals 1927, which was another peacemaking effort made by Quaid-e-Azam Rahmatullah Alayh. Number 5, the Simon Commission of 1928. Number 6, the Nehru Report of 1928, which was anti-Muslim Congress stance. Number 7, the All Parties Muslim Conference from 1928 to 1929. Number 8, Quaid-e-Azam 14 Point of 1929. उसके बाद आता है number 9, the Round Table Conference of London 1930 to 1932. 10, New Constitutional Arrangement, the Government of India Act 1935. Number 11, Arrival and Failure of Cripps Mission 1942. 12, the Cabinet Mission Plan of 1946, a sincere British efforts towards the solution of constitutional problems. Number 13, British Prime Minister's Declaration of February 20th, 1947. Number 14, Mountbatten's Arrival and 3rd June Plan 1947. Number 15, Indian Independence Act July 1947.